उनसे शिकायत जो थी उनकी वाजिब थी, प्रिंसिपल ने माना और कहा कि इसलिए पढ़ाई नहीं होती कि बच्चों की उपस्थिति विद्यालय में कम रहती है, बच्चे आते ही नहीं है। अब जब बच्चों की संख्या कम होती है और बच्चे बदल बदल करके आते हैं, जो आज आते हैं वो कल नहीं आते हैं, जो कल आते हैं वो परसों नहीं आते हैं, तो बताइए पढ़ाई कैसे होगी? एक अध्यापक कैसे जो है उसको ठीक से जो पढ़ा पाएगा, कैसे उनको समझा पाएगा, कैसे उनके साथ जो है ठीक से पढ़ने लिखने की एक्टिविटी कर पाएगा? मैंने कहा बात तो सही है, लेकिन बच्चे आते क्यों नहीं है और बच्चे रोज उपस्थित क्यों नहीं होते हैं? तो इन पर जो है हम आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है। हमने गार्जियन से पूछा कि आप इंश्योर कर सकते हैं कि ये बच्चे जो है रोज आते होंगे? तो उन्होंने कहा हाँ कर सकते हैं। कैसे करेंगे, कैसे इंश्योर करेंगे, कैसे आप जानते हैं कि आपके बच्चे जो रोज आते हैं, क्या आप बच्चों को विद्यालय तक पहुंचाते हैं? उन्होंने कहा सर पहुंचाते तो नहीं है। कितने लोग पहुंचाते हैं? पता लगा कि मुश्किल से मुश्किल केवल 10% से भी कम संख्या थी उन लोगों की जो अपने बच्चों को विद्यालय तक खुद पहुंचाते हैं, खुद छोड़ने के लिए आते हैं और खुद ले करके घर जाते हैं। ऐसी संख्या 10% से अधिक नहीं थी। हमने कहा भाई बाकी जो लोग 30% जो लोग हैं वो कैसे इंश्योर कर रहे हैं कि उनके बच्चे विद्यालय में आते ही हैं? ये कैसे उनको पता? और मैं विद्यालय कह रहा है कि बच्चे जो है बहुत कम संख्या में आते, यानी 10% जो गार्जियन उन्हीं के बच्चे आते होंगे, वो भी कभी आते होंगे कभी नहीं आते होंगे। तो ये कैसे इंश्योर करेंगे कि बच्चे विद्यालय आते हैं? तो थोड़ी देर के लिए नीचे चले जाओ, नीचे जाओ थोड़ी देर, है ना? तो ये बच्चों से कहा गया, गार्जियन से कहा गया, तो गार्जियन चुप हो गए, वो कुछ बोले नहीं। ओके भाई आखिर क्यों आप लोग शांत क्यों हैं? अब बताइए ना, आपके बच्चे विद्यालय आते हैं नहीं आते हैं, या कैसे इंश्योर करते हैं कि विद्यालय बच्चे आते हैं? और एक सवाल ये है कि अगर बच्चे विद्यालय नहीं आते तो विद्यालय आखिर जाते कहाँ हैं? आप सभी लोग ये कह रहे हैं कि हम हमारे बच्चे प्रतिदिन घर से विद्यालय के लिए निकलते हैं, तो इसका मतलब है कि विद्यालय तक वे पहुंचते ही नहीं है, रास्ते में ही कहीं न कहीं कहीं न कहीं कहीं न कहीं वो फंस जाते हैं। आखिर ये बच्चे कहाँ फंसते हैं, कहाँ रुक जाते हैं? कुछ तो आप लोगों को आइडिया होगा, किसी को तो होगा ही। लोग शांत रहे, उसमें से एक व्यक्ति उठ खड़ा हुआ, उसने कहा सर मैं बता सकता हूँ, मुझे आइडिया है। कहा क्या? कहा मैं रिक्शा चलाता हूँ और जो जहाँ ये हम सभी लोगों का घर है तो उससे विद्यालय के बीच में एक पुलिया है, नाले को पार करके आना पड़ता है और उसके बगल में थोड़ी सी जगह है, पार्क तो नहीं है लेकिन पार्क जैसा ही है। तो वहां पर जो है मैंने बच्चों को देखा है। अच्छा, तो क्या करते हैं वहां पर बच्चे? कौन वहां उनको पढ़ाता है? सर वहां कौन पढ़ाता? वहां पढ़ाने वाले का नाम अगर मैं बताऊंगा तो आप भौचक्के रह जाएंगे। मैंने कहा अरे बताओ तो सही, कोई कोई किसी के साथ तो रहते होंगे, कोई न कोई तो वहाँ और लोग भी रहते हैं या केवल बच्चे ही बच्चे होते? कहा नहीं सर अब बच्चे अकेले नहीं होते हैं, वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं और वे लोग होते हैं जो ताश खेलते हैं, बीड़ी खाते हैं, सुरती, और उसी में कुछ नशा करने वाले लोग भी रहते हैं, है ना? और वो मैं आपको बचाऊं, बच्चों को उसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं, बच्चों से जो है वो बीड़ी सुरती और इस तरह की चीजें जो है बच्चों से मंगाते भी हैं और बच्चे लाते भी हैं और बच्चों के साथ वे शेयर भी करते हैं, है ना? बड़ा हमें तो शौक सा लगा, धक्का लगा कि आखिर इन छोटे छोटे बच्चों के साथ ये बुरी आदतें सीखने सिखाने का जो कार्यक्रम चल रहा है इसको कोई और नहीं देखता, इसके लिए समुदाय के लोग नहीं देखते, इतने उदासीन आखिर क्यों हैं? हमने कहा भाई आखिर आप लोग भी तो अपने घर से काम के लिए तो निकलते ही होंगे, है ना? और फिर वापस आते होंगे, तो क्या बच्चों को आप नहीं देखते? कहा सर, उसी ने कहा कि सर ये लोग क्या देखेंगे, ये लोग तो सुबह निकलते हैं और फिर शाम को आते हैं, बच्चे तो इन लोगों के जाने के बाद विद्यालय के लिए आते हैं और फिर पहले ही विद्यालय से वो चले जाते हैं, इनको कैसे पता चलेगा? वो तो हमारे जैसे जो लोग हैं, जैसे मैं देख पाता हूँ ऐसे ही और लोग जो है देख पाते होंगे। कहा भाई क्या हो? तो उसमें ये योजना बनी और ये तय हुआ कि भाई सभी जितने भी गार्जियन आए हुए हैं और आप लोग अन्य जो गार्जियन नहीं आए हैं उनके साथ बैठ करके उनसे साथ बातचीत करके इंश्योर करेंगे कि रोज आज से बच्चों को विद्यालय छोड़ करके आएंगे और विद्यालय से लेकर के जाएंगे, ले जाएंगे और ले आएंगे। ये जिम्मेदारी आप लोगों की है।
और प्रिंसिपल ने इंश्योर किया कि जो बच्चा विद्यालय में आएगा वो स्कूल टाइम में घर नहीं जा सकता। आपने देखा है कि यहाँ पर हमने जो है वो गेट लगवाया है, और मैं खुद जो है रहती हूँ, तो जो बच्चा आएगा वो पढ़ करके शाम को ही जाएगा, बीच में वो घर नहीं जा सकता। तो और मेरे अध्यापक ऐसे नहीं है, मेरे अध्यापक सभी पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी यही है कि बच्चे रोज विद्यालय नहीं आते हैं और बदल बदल के आते हैं, इसलिए उनके साथ जो है कंटिन्यूटी पढ़ाई की बन नहीं पाती। तो अब ये देख लीजिए, समस्या छोटी सी थी, लेकिन ट्रेस कब हुई? जब हमने आपस में बातचीत की, चर्चा की, तब ये समझ में आया कि भाई बच्चों की विद्यालय जानते वो भी हैं, स्कूल भी वाकिफ है, साथ ही साथ समुदाय भी वाकिफ है कि बच्चों की ठीक से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, लेकिन ये जानने की कोशिश नहीं की, विद्यालय ने भी जहमत नहीं उठाई और ना ही जो है समुदाय ने जहमत उठाई कि भाई पता तो करें, भाई विद्यालय को समुदाय तक पहुंचना चाहिए था और समुदाय के साथ उसका अच्छा जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था, ताकि उसे पता चले कि उसके बच्चे घर पर क्या करते हैं, कैसे करते हैं, आना जाना कैसा होता है, घर में कैसा माहौल है। क्योंकि लर्निंग केवल जो है विद्यालय की चीज नहीं है, लर्निंग तो हमेशा होती रहती है, बच्चे घर में भी होते हैं तो भी सीखते रहते हैं, जो कुछ उनके साथ उनके परिवेश में जो कुछ भी हो रहा है उससे बच्चों की लर्निंग तो चलती ही रहती है, होती ही रहती है। आखिर उस लर्निंग का भी तो महत्व है, वो बहुत कुछ सीख करके बच्चे विद्यालय में आते हैं। विद्यालय में बच्चे रहते भी 5 घंटे के लिए है, बाकी का जो समय 19 घंटे का है वो तो घर में ही बीतता है, उनका समुदाय में ही बीतता है, अड़ोस पड़ोस में ही बीतता है। तो आखिर बच्चे भी वहां जिनके साथ रहते हैं, जो बातचीत करते हैं, जो कुछ क्रियाकलाप करते हैं, उनके साथ भी तो उनकी लर्निंग होती है, और भाषा की लर्निंग तो जबरदस्त होती है। और भी बहुत सारे क्रियाकलाप जो घर में, परिवार में, अड़ोस पड़ोस, खेल के मैदान में होते हैं, उनको भी बच्चे बखूबी सीखते हैं। तो इस लर्निंग का विद्यालय में अध्यापक को उपयोग करना चाहिए, है ना। तो अब विद्यालय ने भी कोई परवाह नहीं की, समुदाय के लोगों ने भी यह जानने की जहमत नहीं उठाई कि आखिर विद्यालय से चल करके तो पूछे तो सही कि हमारे बच्चे क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमारे बच्चों की लर्निंग क्यों नहीं हो पा रही है, हमारे बच्चे क्यों नहीं सीख पा रहे, क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, आखिर क्या कारण है। वे लोग भी अपने दैनिक क्रियाकलाप में इतने व्यस्त हैं कि उन्होंने समय ही नहीं निकाला और विद्यालय आए ही नहीं और समझने की कोशिश ही नहीं की। तो अब देख लीजिए, इस तरह का जब समुदाय और विद्यालय के बीच में कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, तब तब समस्या खड़ी हो जाती है लर्निंग की, बच्चे नहीं सीखते। आज इसी तरह की जो प्रॉब्लम है, जो 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 समुदाय में बच्चे जो अगल बगल से जो सीख रहे हैं, आखिर उसमें से जो चीजें अच्छी सीखी हैं अध्यापक उसको अप्रिसिएट करे, जो चीजें उन्होंने जो है गलत सीखी हैं उनको भी धीरे 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 उनको उनसे बच्चों का मन हटाए और समझाए, बताए, उनके साथ उनको अनुभव कराए कि ये ठीक नहीं है। और अगर उन्होंने कोई बुरी आदतें सीख ली हैं, गंदी आदतें सीख ली हैं, कुछ ऐसा खाना पीना शुरू कर दिया है जो उनके लिए उचित नहीं है, ऐसा कुछ व्यवहार करना शुरू कर दिया है जो उनके लिए उचित नहीं है, समाज के लिए उचित नहीं है, उनको धीरे धीरे उन आदतों को रिप्लेस करना है अच्छी आदतों से, बैड हैबिट्स को गुड हैबिट से रिप्लेस करना है ना। बुरी आदतें हटें और उनकी जगह पर अच्छी आदतें बच्चों के अंदर आए। तो इस तरह का कार्य व्यवहार विद्यालय में अध्यापक को बच्चों के साथ करना चाहिए। तो अब हमने एक छोटी सी जो है आपको स्टोरी सुनाई। अब देखिए, आप अपने विद्यालय में आप जाते होंगे और बच्चों को पढ़ाते होंगे, आपके विद्यालय में भी वही बच्चे आ रहे हैं, उसी समाज और उसी समुदाय से आ रहे हैं, तो जरूर आपके बच्चे भी कुछ न कुछ ऐसी हरकतों के, कुछ न कुछ ऐसी आदतों के शिकार होंगे, बैड हैबिट्स के शिकार होंगे, इस तरह के कुछ नशे की चीजें जो है कुछ न कुछ वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन आपने कभी शायद ध्यान नहीं दिया है। जो अध्यापक ध्यान देते हैं उनको पता लग जाता है, और जो अध्यापक ध्यान नहीं देते सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि भाई हमारा काम तो क्लासेज में जा करके कंटेंट डिलीवरी करनी है, और कंटेंट मुझे आता ही है और मैं जा करके वहां डिलीवर कर दूंगा। बच्चों की लर्निंग हुई या नहीं हुई इस बात से कोई अभिप्राय नहीं रखते, इस बात से कोई मतलब नहीं रखते, इस बात से उनका कोई सरोकार नहीं होता है, तो नौकरी के मोड में होते हैं। तो ऐसे अध्यापक नहीं जान पाएंगे कि उनके बच्चों की आदतें बन रही हैं या बिगड़ रही हैं, उनके बच्चे कुछ सीख रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं, और सीख रहे हैं तो अच्छा सीख रहे हैं, गुड सीख रहे हैं
या वो कुछ आदतें ऐसी सीख रहे हैं जो उनके लिए ठीक नहीं है, उनके परिवार के लिए और किसी के लिए भी ठीक नहीं है। क्या ऐसी आदतें बच्चे सीख रहे हैं? तो ऐसे बच्चों को आखिर आपके क्लास में हैं तो उनको कैसे पहचानेंगे? कैसे आप जानेंगे कि ये बच्चे जो है कुछ बुरी आदतों के, कुछ ड्रग्स वगैरह के शिकार हो रहे हैं, है ना? ऐसा कैसे पहचानेंगे? तो सिंपल सी बात है कि कुछ लक्षण हैं जिनके आधार पर आप बच्चों को पहचान सकते हैं। देखिए, कुछ शारीरिक लक्षण हैं, कुछ मानसिक लक्षण हैं जिनके आधार पर आप पहचान कर सकते हैं। अब सिंपल सी बात है, क्लास में आप बच्चों के साथ मुखातिब होते हैं, बच्चों के साथ क्लास में जाते हैं तो पढ़ाने के पहले कुछ बातचीत तो करते ही हैं, कुछ भूमिका तो आप बनाते हैं, कुछ घर परिवार की बातें तो आप करते ही हैं, कुछ खेल के मैदान की, कुछ उनके अड़ोस पड़ोस की जो घर पर वे एक्टिविटीज करते हैं उनके बारे में जरूर जरूर आप कुछ चर्चा करते हैं। और अगर नहीं करते हैं तो आपको करना चाहिए, आप करिए। तो जो बच्चा नशे के शिकार हो जाते हैं या उनके गिरफ्त में आ जाते हैं, उनके व्यवहार में बदलाव आ जाता है। क्यों आ जाता है, किस लिए आ जाता है, इस पर चर्चा मैं बाद में करूंगा। लेकिन मैं केवल अभी इतनी चर्चा कर रहा हूं कि इन बच्चों के व्यवहार में किस तरह का बदलाव आता है। देखिए, चित्र में आप देख रहे हैं कि व्यवहार में बच्चे जो किस तरह का परिवर्तन आता है कि वो असामाजिक बन जाते हैं, है ना, और गुमसुम रहने लगते हैं। असामाजिक होने का क्या मतलब है? बच्चे जो खुल करके बड़ों से बातचीत करना, व्यवहार करना और उनसे जो है अपने जो भी चीजें हैं जो जो उनको अच्छी लगती है उनको शेयर करना, बताना, चर्चा करना, है ना, ये सब बच्चे करते हैं। प्राय बच्चों का स्वभाव है, वो बड़ों के साथ बातचीत करना चाहते हैं, है ना, और अपने साथियों के साथ भी खूब खेलते हैं, खूब बातचीत करते हैं, कुछ न कुछ जो है जो भी करना चाहते हैं उनके साथ खेल कूद करते ही करते हैं। अगर इनमें चेंज आने लगे, बच्चे जो है बच्चा गुमसुम रहने लगे या अपने साथियों से बात न करे या अपने क्लास में अगर आप उससे कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसका जवाब ना दे, है ना, तो ये समझ लीजिए कि कुछ न कुछ जो है समथिंग रॉन्ग, कुछ न कुछ गड़बड़ हो रहा है। बच्चा जो है आ, अलग 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 क्लास से अलग हो रहा है, अपने साथियों से अलग हो रहा है और आपसे भी अलग हो रहा है। वो किसी और दुनिया में जा रहा है, इसका साफ मतलब है। ऐसे बच्चे अलग अलग और अलग अलग होने लगते हैं, अपने साथियों से भी पहले जैसे बात नहीं करते, विषय संबंधी प्रश्न जो पूछे जाते हैं उनका भी जवाब नहीं देते और आपसे भी बातचीत करना वो पसंद नहीं करते। क्लासरूम में प्राय वे सिर झुका करके बैठते हैं या दूसरी तरफ देखते हैं या दूसरे बच्चों को परेशान करते हैं। इस तरह की एक्टिविटी क्लासरूम में अगर उनका बस्ता आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक तो उनकी किताबें गायब हैं और उनके बस्ते में आपको कुछ ऐसी चीजें मिल सकती हैं जो जिनका पढ़ने पढ़ाने से कोई संबंध नहीं है ना, ऐसी चीजें मिल सकती हैं। नशे की चीजें आपको मिल सकती हैं, उसमें गुटखा, तंबाकू और जो है फ्लूड, इस तरह की चीजें जो बच्चे जो है सूंघते हैं या खाते हैं, है ना, या बड़ों का खाया हुआ जो बचा खुचा होता है उसको टेस्ट करते हैं, है ना, तो इस तरह की चीजें आपको जो है दिखाई देंगी, है ना। तो ये बस्ते में आप चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि बच्चे बस्ते में क्या क्या चीजें रख रहे हैं। और इसमें कैसे बच्चे सीखते हैं, अब इस पर मैं बात करूंगा थोड़ा सा और भी कि संवेगात्मक रूप से भी बच्चे जो है कमजोर हो जाते हैं, है ना। वो बच्चों में भावनाएं जो अपने माँ बाप के प्रति, समाज के प्रति थी, वो धीरे 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 खत्म हो जाते। बच्चे एकाकी होने लगते हैं, अकेलेपन उनको पसंद आने लगता है, खोए खोए रहते हैं किन्हीं किन्हीं चीजों में और परिवार अपने माँ बाप के साथ भी उनका धीरे धीरे जो है अटैचमेंट खत्म होने लगता है। उनकी बोली भाषा भी जो है भिन्न हो जाती है ना, गाली गलौज और मारपीट इस तरह की हरकतें वे करते हैं। घर उनका जो खाना पीना है उसमें भी बदलाव आ जाता है, वो समय के मामले में भी और क्या खाएंगे पिएंगे इन मामले में भी। अब वो जो है पहले जैसा जो खाना नहीं खाते और वे जो है चटपटी चीजें और जो है नमकीन और इस तरह की तेज चीजें, इस तरह की चीजें वो खाना पसंद करते हैं। सामान्य भोजन में उनकी जो है बिल्कुल ही अरुचि हो जाती है ना। इस तरह का व्यवहार बच्चों में जो है धीरे धीरे दिखने लगता है। तो इसी तरह टाइमिंग जो बच्चों की खाने की है वो भी बदल जाती है।
जैसे सुबह खाना नाश्ता करना, दोपहर को खाना खाना, शाम को डिनर करना, ये जो सामान्य आदत है, बीच में भी कुछ थोड़ा बहुत माँ बाप जो दे देते हैं उसको खा लेते हैं। तो बच्चे प्राय उसमें जो है समय पर उठते नहीं है, सुबह लेट उठेंगे और ऐसे बिना खाए पिए निकल जाएंगे, फिर आएंगे भी तो रात को नहीं खाएंगे, बिना खाए अक्सर सो जाएंगे, वो अपने पेट में दर्द की शिकायत करेंगे, है ना, सिर दर्द उनको रहेगा, इस तरह की चीजें, और शरीर में टूटती हैं, शरीर उनकी शरीर कमजोर हो जाती है और प्रायः वो जो है लगता है कि किसी दर्द के और इसी तरह की मनोभावना उनके अंदर है। तो इस तरह की लक्षण इन बच्चों में दिखने लगते हैं। तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि बच्चे बुरी आदतों के शिकार हो रहे हैं, कोई न कोई नशे की चीजें ये इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चे, ये आपको ठीक से समझ जाना चाहिए, ठीक से जो है जान जाना चाहिए। और अगर ऐसा हो गया तो फिर अब क्या करें, थोड़ा सा स्लाइड को आगे बढ़ाइएगा। अगर ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे, क्या जरूरत, पहचान तो हो गई है ना, और ये कारण भी आपको पता चल गया कि क्यों क्यों बच्चे जो है ऐसा करते हैं, है ना। इतना पीछे नहीं, आगे नहीं, पीछे ही रखिएगा। कारण ये होता है कि ये बच्चे क्यों नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं, क्या क्या कारण होते हैं। पहला कारण तो ये है कि बच्चे बहुत ही जिज्ञासु स्वभाव के होते हैं, वो हर प्रश्न का जो कुछ देखते हैं वो करना चाहते हैं, जो कुछ बड़ों को खाते पीते देखते हैं उनको खाना पीना चाहते हैं, और वो ये समझते हैं कि जो हमारे बड़े लोग जिन चीजों का सेवन कर रहे हैं वास्तव में कुछ बहुत अच्छी चीज है और उससे उससे उसको हमें दे नहीं रहे। तो उनकी हमेशा इच्छा रहती है कि जो हमारे से बड़े लोग हैं जो कुछ खाते पीते हैं आखिर उनको भी तो थोड़ा सा खा पी करके हम देखें, क्योंकि प्राय जो लोग खाते पीते हैं वो हमको देते नहीं है, बच्चों को देते नहीं है, मना कर देते हैं, बड़ों की चीज है या ये बड़े खाते हैं छोटे नहीं खाते या अच्छी बात नहीं है। तो बच्चे जो देखना चाहते हैं कि कैसे बुरी बात है, कैसे अच्छी बात है, या क्यों नहीं खाना चाहिए, कैसे नहीं खाना चाहिए, और फिर अगर हम खाएंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, फायदा होगा नुकसान होगा, फायदा नुकसान तो कम, वो सोचते हैं कि कोई ना कोई अच्छी चीज जरूर है। तो इस तरह से बच्चे धीरे धीरे जो है प्राय ये बच्चे जो है जैसे पार्कों में अगर या रास्ते में कोई सिगरेट पी करके आपने फेंक दिया है, किसी ने बीड़ी पी करके फेंक दिया है, या गुटखे के पाउच पड़े हुए हैं तो उसको उठाते हैं और पाउचों में से थोड़ा निकालते हैं, थोड़ा बहुत रह जाता है, या नहीं तो गुटखे को जो है जो पाउच होते हैं उसको फाड़ करके और जीभ से जो है चखते हैं। तो कुछ कुछ उनको लगता है कि यार कुछ तो ये अलग चीज है और इसको थोड़ा मजा सा आ रहा है। तो फिर जो है अब थोड़ा थोड़ा उन्होंने चख लिया। इसी तरह से बीड़ी सिगरेट भी थोड़ा बहुत जो है जो रह जाता है उसको पी करके लगता है हाँ कुछ चीज तो है, कुछ चीज तो है। अब वो क्या करते हैं बच्चे कि जो पॉकेट मनी आप देते हैं तो उसको लेकर के दुकान पर जाते हैं और इन चीजों को खरीदते हैं, और दुकानदार भी जो है दे देते हैं क्योंकि उनका तो बेचना काम है। वो भी इस पर विचार नहीं करते कि ये भाई ये जो है आखिर छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना, और इनको हमको नहीं देना चाहिए, वो भी दे देते हैं क्योंकि उनके बच्चे तो है नहीं, और अगर बिगड़ेंगे तो दूसरों के बिगड़ेंगे। कुछ कुछ दुकानदार ये भी सोचते हैं कि भाई ये बच्चे जो है मारपीट पर भी उतारू हो जाते हैं, झगड़ा झंझट भी करते हैं, गाली गलौज भी करते हैं, इस डर के मारे भी, और पैसे वो दे ही रहे हैं तो उनको देने में कोई आपत्ति नहीं होती है, फिर वो अपना पिंड छुड़ाते हैं दे दा करके कि लो भाई। तो इस तरह से ये चीजें उनको उपलब्ध हो जाती है और फिर उनको खाने पीने लगते हैं। जब वो खाने पीने लगते हैं तो धीरे 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 चीजें उनको जो पसंद आने लगती हैं, है ना, और फिर उनके आदी हो जाते हैं। इसी तरह से जो फ्लूड वगैरह है और कुछ खांसी वासी की दवाई है उसको भी पीते हैं तो उसको भी धीरे धीरे आदी हो जाते हैं। इसी तरह मिट्टी का तेल है, स्पिरिट है, और इस तरह केरोसिन ऑयल है, ये सब चीजें भी घर में मिल जाती हैं, पेट्रोल है, तो उसको भी बच्चे जो है वो रुमाल में लगा करके सूंघते हैं। अगर ये भी चीजें जो है एक बार तो अच्छी नहीं लगती, लेकिन धीरे धीरे आप सूंघते हैं एक दो बार तीन बार तो वो जो है कुछ उसकी जो है एडिक्शन आ जाता है, कुछ न कुछ उससे जुड़ाव होने लगता है, और फिर उनकी गंध जो अच्छी लगने लगती है और धीरे धीरे उसके आदी बन जाते हैं। तो बच्चे ये भी काम करने लगते हैं, कुछ खाने की, कुछ सूंघने की, कुछ जो है लगाने की, इस तरह की चीजें जो इस्तेमाल करने लगते हैं। और ये चीजें इस्तेमाल करते करते और ये उनके स्वभाव में आ जाता है, ये उनके नेचर में आ जाता है और उसको वो फिर छोड़ नहीं पाते। इसी तरह से तो छोटे छोटे नशे हैं, वो जो समुदाय अभी जो मैंने पीछे जिक्र किया था कि पार्कों में जो लोग मतलब खाते पीते हैं इस तरह की चीजें,
और कुछ ऐसे भी लोग हैं उन्हीं खाने पीने वालों में से जो उसका व्यापार भी करते हैं, उसका व्यापार बेचते हैं। पुड़िया पुड़िया में जो है वो ड्रग्स वगैरह आते हैं, है ना, सुल्फा गांजा और इस तरह की चीजें आती हैं, उनको बेचते हैं, उसका व्यापार करते हैं। तो वो भी जो है धीरे 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 जो है बच्चों को इसलिए उसके आदती बना देते हैं कि बच्चे जो है वो हमारे लिए काम करेंगे, और ये बच्चे करने लगते हैं। आखिर इनको भी तो नशे की चीजें चाहिए ना। अब ये चीजें कहाँ से आएंगी, कैसे आएंगी, घर से तो इतने पैसे मिलते नहीं। तो फिर इन पैसों के लिए बच्चे जो है उनकी बातों को मान लेते हैं, और जैसा वो कहते हैं वैसा वो करने लगते हैं। यानी जो है चीजों को खरीदने लगते हैं और उसको पीने लगते हैं। इस तरह का व्यवहार जो है धीरे धीरे बच्चों में आने लगता है। इस तरह का व्यवहार जब बच्चों में आ जाता है और बच्चे उसके आदी हो जाते हैं, तो फिर अभी छोटी छोटी फिर वो चोरियां करने लगते हैं। फिर वो जो दूसरों को घरों में जो है रेकी करके, और फिर जब वो नहीं रहता तो ताला तोड़ना और घर की चीजें चुरा लेना और फिर ले जा करके जो है बेच देना। इसी तरह जो कहीं लोहा मिल गया, मतलब कोई भी चीज उनको मिल जाएगी तो उनको तो बस नशे की चीजें चाहिए। चाहे चीजें कितने की हों, उनको तो मतलब उतने पैसे मिल जाने चाहिए कि एक बार का काम चल जाए। तो ऐसे बच्चे ये काम करने लगते हैं। और इसी तरह के जो आप हमने पहले बताया कि वो नशे के जो व्यापारी लोग हैं, स्मगलर जो लोग हैं, उनके साथ वो जुड़ जाते हैं और व्यापार करने लगते हैं। विद्यालय में आना जाना उनका नाम मात्र का रह जाता है। तो ये बच्चे ऐसे जो असामाजिक लोग हैं, जो नशे के व्यापारी लोग हैं, उनके साथ भी इनका जुड़ाव हो जाता है। तो इस तरह से बच्चे धीरे 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 जो है नशे की आदतों के शिकार हो जाते हैं। ये तो बात रही कि कैसे बच्चे जो है वो जुड़ जाते हैं, कैसे बच्चे जो है नशे के आदी बन जाते हैं। एक बार जब बच्चे नशे के आदी बन गए तो फिर जो है उनको अलग करना मुश्किल है। वो चाह करके भी नशों को छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि जो छोटे छोटे नशों का नशा तो है ही, बड़ों बड़े जो चीजें हैं उनका नशा बड़ा होता है ना। तो कुछ जो ड्रग्स जो इस्तेमाल करते हैं, उनमें उनके अगर आदी हो गए और ड्रग्स नहीं मिलता है तो उनका जो है शरीर टूटने लगता है, पूरी तरह से टूटने लगता है, और उसमें जो अकड़न हो जाती है और वो बिल्कुल जो है जमीन पर पड़ जाते हैं। और कई तो उनके मुंह से जो है झाग आने लगते हैं। इस तरह के लक्षण जो उभरने लगते हैं और बहुत परेशान हो जाते हैं। और जब तक वो ड्रग्स नहीं मिलता तब तक वो सामान्य स्थिति में नहीं आ पाते। तो ऐसे ऐसे बच्चों के लिए जो इस तरह के नशे के शिकार हो गए हैं, आखिर उन बच्चों को कैसे जो है मेन स्ट्रीमिंग किया जाए, कैसे उन बच्चों को फिर से उन नशे की आदतों को छुड़ा करके और सामान्य जीवन जीने के लायक बनाया जाए, क्या उपाय किया जा सकता है, क्या उसका तौर तरीका है। तो देखिए, पहला तो ये है कि लक्षणों से आप बच्चों को पहचान लेंगे। एक बार जब बच्चों को आपने पहचान लिया तो उन बच्चों को, जो बच्चे अभी आदती नहीं हुए हैं, प्रारंभिक अवस्था में हैं, उनको तो समझा करके बुझा करके और गार्जियन की मदद से आप जो है मेन स्ट्रीम कर सकते हैं आप। लेकिन जो बच्चे आदती हो चुके हैं और जो उन नशों के बिना नहीं रह सकते, जिनमें जो जिनका शरीर साथ नहीं देता, जिनका मन साथ नहीं देता, है ना, उन बच्चों को क्या करेंगे। तो वो बच्चे कहने से या नैतिक उपदेश देने से वो ड्रग्स को नहीं छोड़ेंगे। उनके लिए जरूरत इस बात की है कि उनको जो नशा मुक्ति केंद्र हैं, जो डॉक्टर हैं, जो चिकित्सक हैं, जो चिकित्सक हैं, उनके पास आपको ले जाना पड़ेगा, तब वो जो है नशे से दूर हटेंगे। तो आखिर ऐसे बच्चों को कैसे जो है चिकित्सकों तक पहुंचाए, नशा मुक्त, थोड़ा विद्यालय में जाए। हेलो। तो मैं आपको ये बता रहा था कि ऐसे बच्चों को सबसे पहले आप जो है उनके मदर फादर, अपने प्रिंसिपल से संपर्क करें और प्रिंसिपल को बताएं कि आपके क्लासरूम में क्या हो रहा है और बच्चे आखिर किस तरह के नशे के शिकार हो रहे हैं, और ये बच्चा जो नशे का आदी हो चुका है, इसके लिए हमें जो है नशा मुक्ति केंद्र तक इसको पहुंचाना पड़ेगा। तो आपने प्रिंसिपल से अनुमति लेकर के आप जो है बच्चे के जो माँ बाप हैं, पहले उनसे आप संपर्क करिए। बच्चे के माँ बाप इस बात को स्वीकार करें, इस बात से सहमत हो
कि बच्चे जो है, बच्चा नशे का शिकार है और उसकी स्थिति गंभीर है, अच्छी नहीं है, और उसको जो है डॉक्टर तक ले जाने की जरूरत है। क्योंकि प्रायः जो बच्चों के माँ बाप होते हैं वो इसको स्वीकार नहीं करते, तो वो उनका स्वीकार करना मुश्किल होता है। तो आप थोड़ा सा उनसे मिल बैठ करके थोड़ा समझाएंगे, बताएंगे और ये कहेंगे भी, भरोसा देंगे कि बच्चा आपका मेन। सर आप म्यूट पे हैं। सर आप म्यूट पे हैं, आप अनम्यूट कर लीजिए सर। हेलो जी, अब आवाज मेरी सुनाई? एक फोन आ गया था, इस वजह से डिस्टर्बेंस हो गया था थोड़ा सा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि एक बार आप जैसे बच्चों को आपके विद्यालयों में ईवीजीसी जो होते हैं, इन लोगों से संपर्क कीजिए, इन लोगों का सहयोग लीजिए। ये लोग इन बच्चों की भावनाओं को, इनको अच्छी तरह से समझते और जानते हैं, तो इनके सहयोग से आपका काम आसान हो जाएगा। ये लोग जानते भी हैं, इनको पता भी होता है कि नशा मुक्ति केंद्र कहाँ है, कौन डॉक्टर है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये बच्चे की जो नशे की आदत है उसकी गंभीरता को भी समझ जाते हैं, है ना। तो जो ईवीजीसी आपके विद्यालय में होते हैं उनका सहयोग लेकर के और माँ बाप का सहयोग लीजिए, क्योंकि बच्चों के माँ बाप के बिना ये आपका काम जो है हो नहीं सकता। क्योंकि इन बच्चों को नशा मुक्ति केंद्र पर ले जाना पड़ेगा और वहां बैठना पड़ेगा, तो ये काम आप नहीं कर सकते, आप इतना समय नहीं निकाल सकते। आपके पास समय लिमिटेड होता है और भी बच्चों को पढ़ाना होता है, विद्यालय आपको अनुमति नहीं देगा इतने समय के लिए। तो आप क्या करें कि आप जो है माँ बाप को ये जिम्मेदारी सौंपे और बीच बीच में जो हाल चाल लेते रहें, सहयोग करते रहें। तो ये रेगुलर, अगर ये जो है नशा मुक्ति केंद्र पर जाएंगे तो अध्यापक चिकित्सक देखेंगे और जैसी स्थिति होगी, अगर इनको भर्ती करने की जरूरत होगी तो नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती भी कर लेते हैं। अगर भर्ती करने की जरूरत नहीं है और घर पर रेगुलर रेगुलर कुछ दवा खाने से और कुछ देख रेख से और कुछ सलाह आपको दे देंगे, उससे अगर ये काम बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह का नशा मुक्ति केंद्रों के सहयोग से, चिकित्सकों के सहयोग से और जो ईवीजीसी जो है इनके सहयोग से ये बच्चे को नशे से दूर किया जा सकता है और फिर उसको मेन स्ट्रीम किया जा सकता है। ऐसे बच्चों की रेगुलर जो है देख रेख बहुत ही जरूरी है। अगर बच्चों की रेगुलर देख रेख नहीं होगी तो बच्चे जो है मेन स्ट्रीम नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप सभी लोगों से अनुरोध है, सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस तरह के जो बच्चे हैं उनको पहचान करें और फिर उनको ईवीजीसी का सहयोग लेकर के नशा मुक्ति केंद्रों तक पहुंचाएं और ताकि इनका इलाज हो सके। अब इसमें सरकार की क्या भूमिका है? सरकार का मद्य निषेध विभाग है, वो लगातार जो इस मामले में कार्रवाई करता रहता है और तरह तरह के नियम भी बने हैं। और सरकार ने जो है ड्रग्स जो आपकी विद्यालयों में 100 मीटर के अंदर बेचे नहीं जा सकते, 18 वर्ष से कम उम्र के लोग इसको बेच नहीं सकते, है ना। ये तरह तरह के उपाय किए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बच्चे जो है उनकी गिरफ्त में या लोग उनकी गिरफ्त में आते ही हैं। तो सरकार जबरदस्ती नहीं कर सकती, है ना। सरकार आपको जो है तरह तरह से कन्विंस कर सकती है, तरह तरह से आपको वो उपाय अपना सकती है और अपनाती ही है। तो सरकार की भूमिका यही है कि तरह तरह के कानून बनाए, तरह तरह की एक्टिविटीज करे, जिसकी वजह से लोग नशे से जो है बच सके, है ना। तो दूसरी बात कि जो समुदाय है, समुदाय की क्या भूमिका है? आप देखते हैं कि बच्चे जो है समुदाय में चूंकि रहते हैं
तो इसलिए समुदाय के लोगों की भी, जैसे अड़ोसी पड़ोसी हैं, उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका, वो जानते हैं बच्चे के बारे में, तो वो भी सहयोग करें, वो भी थोड़ा माँ बाप को बताएं, विद्यालय से जो है के को भी बताएं, और बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाएं, तो इस मामले में जो अच्छा काम हो सकता है। इसके अलावा जो मीडिया की क्या भूमिका हो सकती है? देखिए, मीडिया जो है ना, मीडिया ये काम कर सकता है कि जो अच्छे कार्य हो रहे हैं विद्यालय में, जो अच्छे कार्य हो रहे हैं, अगर इस तरह का कार्य हो रहा है बच्चों को नशे से दूर करने का, तो उसको अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित करे, है ना। तो अगर इस तरह का करेंगे तो हमारे समझ से आपको लाभ मिल सकता है। हेलो हेलो। जी सर। यस सर। हाँ, नमस्कार। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि अगर सभी लोग सेफ्टी मेजर अपनाएं, उपाय अपनाएं, और सभी लोग सहयोग करें, तो बच्चों को इन गलत आदतों से दूर रखा जा सकता है, या नशे की आदतों से छुड़ाया जा सकता है, और मेन स्ट्रीमिंग की जा सकती है, उनकी रक्षा की जा सकती है। तो इसलिए हम आप सभी लोगों से अनुरोध करेंगे कि आप लोग अपने अपने विद्यालयों में ऐसे बच्चों की पहचान करें, और ऐसे बच्चों को नशे की आदतों से बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और अगर कोई प्रश्न हो तो आप हमारे से पूछ सकते हैं, क्योंकि समय हो चुका है। जी। हेलो, आप लोग सुन पा रहे हैं? कोई प्रश्न है आप लोगों का? जी सर, सब सुन पा रहे हैं। आई थिंक कोई प्रश्न नहीं है किसी का भी। तो अभी हेलो, जैसे कि सर ने बताया कि सब्सटेंस अब्यूज। सर, आवाज आ रही है अगर आपको? आप सुन पा रहे हैं तो जवाब दीजिए, कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए। तो कोऑर्डिनेटर मैडम से अनुरोध है कि ये सेशन अब समाप्त होने की दिशा में है। अगर आप कुछ पार्टिसिपेंट को कुछ कहना चाहते हैं तो आप कहिए, और मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग फीडबैक फॉर्म जरूर भर दें। मेरा नाम और नंबर आप लोगों को मालूम है, डॉक्टर के शास्त्री। टेलीफोन नंबर मेरा नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, 9718311399। थैंक यू सर। थैंक यू। आई थिंक सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा, और ये कुछ सर ने पूछना काफी चाहते हैं? डिटेल में बताया है। जी सर। हेलो, जी सर, बोलिए। चंचल जी। जी सर, बोलिए। चंचल जी, जी सर, बोलिए। सर बोलिए, मैं बोल रही हूँ सर। लगता है आप मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, और पार्टिसिपेंट भी हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। सर नहीं आपकी सर, आवाज मेरी आवाज आ रही है सर किसी को? बहुत मैम, मेरी बहुत आवाज धन्यवाद। क्लियर तो है? इसलिए मैं अपना सेशन अब आपकी यहीं आवाज आ जो है रही स्टॉप कर रहा हूँ। मैम, मेरी आवाज आ रही है? है? जी मैम, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। ओके। तो अभी सर के सेशन के बाद हमारा हाफ एन आवर का ब्रेक रहेगा। हम जी मैडम 11:30 बोलिए। पे दोबारा मिलेंगे। ओके मैम। हाँ, 11:30 पे हमारा सेशन रहेगा राइटिंग पार्ट का। तो अभी 11:30 पे हम दोबारा मिलेंगे। अभी हाफ एन आवर का ब्रेक रहेगा। थैंक यू। ओके। थैंक यू ऑल।
खुदा वो कौन तर बट कौन सा 20 घंटा है वो थोड़ी देर टिकट करना हो की बाढ़ में दिल्ली आना ही पर्सन के वो सामने खानदार है
अब वो कुल 3 का स्टैंडर्ड है। आपसी के नाम से शुरू का आज तो ठीक है पर ठीक लास्ट में कल लगा था तेरे को और बात कोई भी हो जाए हमेशा समझा अगर वे मानी और क्या हुआ तो हो जाओ काफी टाइम अभी ना हूँ मेरे आज समझ में हो रहा है अठासी तो गया था वो मुख अच्छे मन बोल रहा था लेकिन आप कहते हैं लोग तो राइट में क्यों सड़ा हां आ खट लगाई आप कहते हैं नोबल ने कौन नोबल को ठीक है टाइम अपन लिख लगा टाइम पर हां हां तो उम्र भी खड़ा अपन को हिसाब खड़ा और बट जादू बढ़ गया चल साइड तो भाई आपको बोला के बाद मैं ये लोग ठीक उनसे देता था फिर बच्चे अब जाओ क्या रही बच्चा खत्म थे एक लास्ट बच्चे जी के कर क्लास निकाल यही प्रयास चालू इस ले ला जो आता है यहाँ की बात में के जो हेलो मैम, ये ट्रेनिंग चल रही है या फिर नहीं चल रही है? अब भाई वाकई थोड़ी देर ठहरा लगा नहीं उन मना कर जो सान
मना तो अभी भी उन करो से और कोई एक साथ उन करो यही तो फिर तो मैं भी खेला तूने तो सुबह में ही किया है उसने पर आज वीजा ले लिया Is it session end? सारा करवानी तो बस चावल की बात करते हैं या ज्यादा ही मोटी बनती है खेली से ज्यादा ही मोटी बनती ठीक रहेगा चावल का खिचवाई लगा सारा ये इन्होंने की पीछे बाड़ा में मकान उकान पीछे बनाई थी मैं बैठ वाट सारा पिछाई लगाई क्या कम से कम आप देखिए उनको कितनी बड़ी प्रॉपर्टी कितनी दुकान है कैसे मुझे आप कहें आप कहें एक तो चीज बड़ी ओ भाई ना भाई प्लास्टिक देखो वो करो कोई अब आप बाई तुम दिखा रही छोटा मकान यही तो है फर्क यही है अब रोड कोई नहीं हो क्यों दे लोग हैं तो अब का सो एक किचन मत कोई बनाई तो मत बोल लेकिन बस हो वो बता ये कर जाना उठी अब तू देख रही है आती गाड़ी तो छोटी आई हाँ तो वो तो लोग
और गेस्ट टीचर पे सही भी मान, और गेस्ट टीचर उसको ठीक भी मानते हैं उसको, और गेस्ट टीचर को कोई विशेष बोल So welcome back. I hope all of you are here right now. Now let's start the session. And now we have with us Miss Meenu, and she will be talking about writing skills, and she will be covering the theory part of writing skills. For both the periods, she will be covering the writing skills. So Meenu ma'am will be here with us till 1 o'clock. So welcome Meenu ma'am, and you may start the session. Am I on? Yes ma'am, you are. Thank you so much. Welcome back. Good morning. I am Meenu Gupta. I would be taking this session on writing skill theory. So before we start this session, let's have a small warm-up activity. Come up. So let's get ready for the small, as it is a writing skill exercise. So request you to please open your chat boxes and sentence, just a small word. Ready? Someone unmute himself or herself and say yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. The first word would be the first word would be chocolate. Can you guys please use the chat box? Just a small word. Goblet. Goblet.
Thank you, Sunil sir. No one else. Priyanka ma'am has written copy. So now I'm audible. Now it's short. The next word is gibberish. Thank you, Tanvi ma'am. Thank you, Tarundeep ma'am. Sunanda ma'am, thank you. Perfect. So last word would be Czechoslovakia. Tarundeep ma'am has written. Anyone else? Thank you, ma'am. Sonal ma'am has written. Thank you so much. And yeah, perfectly right. Sunanda ma'am had a typos, I guess. Thank you. So small warm up. So I know everybody's attention is to me and I'm completely audible. Let's move on to the next slide. So let's have a small brainstorming session. Now I would need everybody's help. Manoj sir, can you please unmute yourself and question? Manoj sir. Please unmute yourself, Manoj sir. Or Supriya ma'am, could you do it? Yes, ma'am. Thank Why do we write? Please read the first question. Yes, ma'am. Should I read all the three questions or just the first one? Yeah, I think let's go at all the three. Okay. First question, why do we write? Second, why is it important for everyone to write? Third, what is writing? Sunil sir has answered the first one quickly. We write to express our thoughts and feelings. Ranvi ma'am, thank you. To express and impress. Wow, what a rhyming. Anyone else? You can use your chat boxes. I guess today technically we are a bit slower, so chat box would be a better option. To record, great Sangeeta ma'am. To keep records for a longer time, thank you Tarundeep ji. Simriddhi ma'am said that we write so that our thoughts have permanency. Wow. Tanvi says to impart information or knowledge. So that's a great expression and you have actually reached a lot of options. So let's move on to the next slide. To express our imagination, great. Give wings to our imagination, to show our creativity. So these are some of the answers. Can somebody take a call and go through, read them? Any one of you who is able to unmute? Okay, ma'am. Ma'am, I'll I do can it. do Need of writing. Should I continue or? Yeah, sure, no Hello. problem. Supriya. Yes. Yes. Need of writing. Why do we write? Why we write? We write to understand. We write to change minds. We write to be understood. We write because it's required. We write because we care. We write to make a difference. We write because we feel like it. We write because we can. We write to be heard. Why we Great. write? To So tell a now I'll story. request Sunanda ma'am because she also unmuted herself. Sunanda ji, can you please unmute? Yes, ma'am. Thank you. Second one is why we write. To tell a story, to help others, to tell the truth or how we feel, to express ourselves and our emotions,
to send a message, to remember a moment or hold on to something, to say what we are not ready to say out loud, to remember the people, places, and moments we hold dear. Thank you, ma'am. Thank you so much, Sunanda ma'am and Supriya ma'am. So these are some of the reasons, and everybody writes for a different reason at a different point of time. Built in the need of writing is the importance of writing as well. So when we go on to writing as such, so let's define what is writing. Priyanka, can we move on to the next slide, please? Okay. So what is writing? Can somebody try to define writing? The chat box is all yours. As is a writing session, I'll make you write a lot. Okay, what is writing? Anybody? Medium of human communication. Okay, that's Sakshi for you. Thank you, Sakshi. Anyone else? Writing is to arrange the chaos that goes on in our mind. Thank you, Sunanda ma'am. The way to express feelings or thoughts. Ritu ma'am for us. What exactly is writing? The question is that when we talk about reading, we talk about coding and decoding of symbols. Then what is writing if we say like this? I am sorry, I guess I logged out. Am I audible now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Repeating. So writing is the act or art of forming letters and characters on paper, wood, stone, or any other material for the purpose of recording ideas, which letters and words express, or of communicating them to others by visible signs. So just like reading is decoding of preconceived symbols, similarly writing is just putting those symbols down on paper. Paper or like for example, today we are putting it on our chat box because we. So from writing comes the topic of our session, the writing skill. Let's move on to the next slide. Yeah, writing as a skill. So when we talk about writing as a skill, it's a form of communication that allows us to put our thoughts and feelings and ideas on paper after organizing our knowledge and beliefs into convincing arguments.
and to convey meaning through a coded script in a language. So there is a very minor difference between writing and writing as a skill. So everybody can write, but everybody have writing skills. Can somebody unmute themselves and point out any difference? Anyone? uh, Writing, the difference between writing as a skill and merely writing is that even someone who knows only to put his or her signature on a paper is a writer, because he or she can write a particular word. But when it comes to writing as a skill, it's like I said, like it already defines, is a skill via which you can move people, you can you know create a revolution, you can make people emotional, angry. In a way, it's about putting your ideas in a comprehensible manner, whereas writing is just putting words or mere letters on paper. That's the difference, I guess. Uh, for the any novice can also write, put down his signature, he can write. But when we talk about it as a skill, then it needs serious effort. Uh, Sorry, am I audible now? Yeah, now you're audible. You weren't before. I'm so sorry. Actually, I think today technically the meeting is not so very technologically sound. So what I was saying that Supriya has put it very clearly and very comprehensively that any novice can write, but writing as a skill may need serious effort. So let's move on to the next slide. So how do we actually help students develop writing skills? So some of the tips now, because my voice and my voice is cracking, so I'll need yours help. So can somebody help me out through reading this page? Yes, ma'am. Please continue. Ma'am, let Sonal ma'am speak. Okay, thanks. Some useful tips for writing correct English. Many students struggle with writing in English, and it can seem like a real challenge to improve. Here are some simple steps that you can take to improve the writing skills of learners. Expanding vocabulary. To express clearly, one needs a good active vocabulary. That is not just being able to recognize words, it means being able to use them correctly. Do this by learning new words with example sentences, not just cramming word lists. When you learn a new word, try learning all the forms of that word and the prepositions that are usually used with it. For example, rather than just the word depend, make a note of to depend on, depending upon, to be dependent on, a dependent. Thank you. Thank you so much, Sonal ma'am. So what we have pointed out, ki we'll write
Can we have a good? It's okay that we. But for developing writing as a skill, first thing we need is the raw material, which would be vocabulary. And not just the word, but the preposition or some connectors with which that word is used specifically, which we talk about, like able to. So can we have one or two more? Meenu ma'am, you're not audible. Am I audible now? Yes, you're now. I'm sorry. I think today we are facing a severe network issue. So now I'm logged in from another device as well. So great reading, Sonal ma'am. Thank you so much. So we need to know not specifically the word, but we need to know how that word is used, with what preposition specifically the word is being used. For example, if we talk about able to, rise to the occasion. So let's move on to the next slide. So somebody can, like, Priyanka, can you help me read? Yeah, sure, ma'am. Mastering and remembering English spellings. You must know how to spell those words correctly. Incorrect spelling changes the meaning of your sentence. For example, bear and beer sounds the same, but bear means uncovered and bear is a wild animal. Tip: practice your spelling using flashcards and test yourself whenever you have some spare time. Practice your spellings by frequently writing them. Thank you, Priyanka. So this is one thing we need to mention to spellings. That's why we started the game with a spelling game. This is something you can play ways as you can tell, you can offer sounds that help practice there. Moving on to the next slide. Hello. So read regularly and widely. Just like speaking has the inbuilt requirement of listening, similarly, if you want to write well, you need to read well. And what would happen if you read well? You can read anything from comics, books, magazines, newspaper, articles, anything. What would happen? Can we use it to repeat? Yes, ma'am. What would happen if we read? It provides us the raw material, Perfect. expands It our expands our vocabulary. vocabulary. Thank you, Sangeeta ma'am. Well said. It gives us material to write about. It expands our vocabulary. Anything else? See, reading offers you an practice or experience in syntax. How to frame a sentence? How do you build coherence of your ideas in a paragraph or in a piece of writing?
So material vocabulary makes sense, but that makes more sense would be how to write a sentence or build up coherent ideas. Next would be improving grammar and punctuation. When we had a game with Priyanka, she had homed in this point that punctuation is very important. It's more like let's eat grandma and let's eat grandma. So moving on, next slide. I hope now I'm audible and there is no technical error at my point. Yes, ma'am. Thank you so much, Priyanka ji. Can somebody help me read this? I'll do it. Say I lack writing skills. So this is how we come up with our answer sheets. Small question for you guys. If you have something like this in a answer sheet, how would you assess? Would you put marks on this or not? You can use the chat box, please. Please help. Would you give marks to something like this in an exam? No. Sunanda ma'am says no. Sunita ma'am says no. No marks, Sonal. Thank you. I Ruby think says no. comprehension we can give, but not for writing skills. Okay, Samriddhi says at least the syntax is correct. So she might give some marks for the syntax. Thank you, Sangeeta ma'am. So this is what happens with And us. I have a question. Since you have brought this up, when we get an answer key in our final examinations or say for our pre-board, clearly written that if you think that a student has understood the meaning of a particular chapter, or if a student has understood what was there in the chapter, it's supposed to give marks. So this is what is usually written in the answer key. So what are we supposed to do when we come through a situation like this? See, this is what the call I'm like trying to point out. And what others are saying, it makes sense. Unless and until there is a bifurcation regarding content and expression, I don't think so you can award marks. So that's why we are focusing on that we need to build proper vocabulary, spelling and grammar for the students so that they have a proper writing skill. Let's move on to the next slide. Thank you so much for helping me. Thank you, Soni ma'am. Satish sir said no. Thank you so much. So these are some sort of some types of writing that we do. There is persuasive writing, there is narrative writing, there is descriptive writing, and there is an expository writing. So those who are using mobile can take a screenshot also. This will help in future. There's a lot of information on various types of writing that are there. And each type of writing has a different purpose. For example, if I'm writing an essay, editorial, or a book review, then I might use the type of persuasive writing that I would like people to go through my editorial and my book. Similarly, if I'm writing a story or a skit or a play or a personal experience, then I might use a narrative writing. If I'm writing character description, descriptive writing. And similarly, if I'm doing some research report or a newspaper article or a glossary thing, then I might go for type of writing that is expository writing. So the way I write would be depending on the purpose for which I am writing. So over to the next one. Let's have a small e-poll. We are going to a Mentimeter. You see a link in your chat boxes. Please click on the link and you would reach the Mentimeter quiz.
Just a small one. अमित का And tabulating observation for science क्या हुआ? सुनो सुनो experiment is a type of. Which type of writing it would be? One person has answered. Anyone else? Okay, 2 for expository. No one else? 3 for expository. Wow, everybody was paying attention. I have a great audience. 5 else? Thank you so much for participating. So this is one way we need to persuade. Okay, people who couldn't participate have used the chat box. Sandeep sir has said persuasive and Sunanda ma'am has answered expository. The answer would be expository because we are doing collecting data for a research thing. Okay, let's move on to the next slide. So the first topic for writing skill for our students would be letter, formal letter. Formal letters, there could be various type of formal letter are in our syllabus, specifically class 9 and 10. It could be complaint letter, it could be a query letter, you can place orders, you can write. But the most popular would be which one is the most popular for the students? Yes. Letter to edit. Letter. Ruby ma'am, thank you. Tanvi ma'am has written letter to editor. Sonal ma'am, again letter to the editor. Thank you so much. Need to focus on letter to the editor more. And the other letters come later. And the best part of writing letter to the editor is we know the opening lines, we know the closing lines. So we are in a better position to award marks. Yes or no? Yes, ma'am. Yes. So how can we ensure that students are able to write the letter properly? The first thing we need for writing a letter would be the format. So once you have done with the format and done a letter with the students or you have practiced it, we still find that students don't write them properly. So one way of helping them understand where they are wrong is to help them make them find errors themselves. So we can give them a wrong letter and we can do some errors in them and let them point out the right answer or let them point out the error, let them circle the error and then correct them. Another could be give them a letter and this questionnaire and they can fill this questionnaire. Then they will be in a better position to understand where specifically from a question to an answer to a where they are supposed to write the information that has been provided to them in the question itself. So we can do this activity. Let's move on to the next slide. There is a letter on the side. Let me ask the question. Who is the sender? Dhanya. Anya. Thank you so much. So the next question. What was the next? Can somebody help me?
Okay, the next was just pull leg, sorry. When was the letter written? 3rd November 2020. Thank you, Sunil sir. 3rd November 2020. And whom the letter was written to? To the commissioner. Commissioner. And reason for writing the Municipal letter. Corporation Vaishali. regarding poor condition of road. Thank you, Tarundeep. Thank you so much. Thank you, Sandeep sir. And how issue affected their life? How? The most difficult question. How? The road is full of potholes, and in the winter season, the situation will be worse. Thank you, Sunil sir. So these are some small questions we can put up from an already done letter so that students can understand where a thing goes in a particular format. How are they supposed to write the letter? Because usually what happens, despite all our practices, despite all our efforts, students don't end up writing the letter properly. So this is one to ensure write the letter properly. Then another would be what we have been doing for years, that we give them opening lines, we give them closing lines, we tell them yahan se ye uthana hai, yahan se ye uthana hai, and then we help them write a letter. However, only writing the format may not help. They need to add on to the body of the letter. We need to make it sure. Am I making sense to everybody? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Thank you so much. Let's move on to the next thing. So the next is writing articles. And we know articles actually take a lot of marks. So if they are able to write them properly, we'll end up being free of from our all worries and stress. बच्चों के number नहीं आए हैं. So हमारा सारा tension खत्म. If we are able to help them understand these some big areas, letter, writing articles and all that. What are the requisites of writing article? क्या क्या चाहिए एक article writing के लिए? Anyone understand? Can I, ma'am? Am I audible? Sure. Thank you so much. Anything I have missed which we needed for writing articles? Anything? Coherence between Sorry, I missed. Can you just repeat? Coherence between the ideas. Thank you so much. Makes sense. Coherence is needed because sometimes they do write, their ideas are also correct, but they don't make sense because they are not coherent enough. They are not placed at the appropriate place. Thank you so much, Sonal ma'am. So to the next slide. So what would be the format of the article? Anyone? We are missing, we are only 2-3 people we are able to hear. Anybody else who has not spoken as of now can take lead and read. Ma'am, the first para would include introduction. We would start with slogan. Then comes a question, an amazing fact, figure or statement,
And then the second and third paragraphs come, which state the cause, effect, present state of affairs, etc. Thank you so much, Simran. So there would be a little bit difference between a paragraph and an article. Or not? They're the same. No, ma'am. Same or different? Paragraph and articles. Definitely different. Definitely different. So we need to help students, because point is we help them grow up on paragraphs. So the student in suddenly in class 9th don't understand the difference between article and format. One way could be help them work on the same topic in a paragraph and so that they are able to understand the difference between the two. Audible now because Sunil sir is saying my voice is not clear. You're audible, ma'am. Thank you so much. I'm sorry, Sunil sir, that the technology is ruining the class. This is what happens when you go virtual. Pointing out that we need to work on the same topic for paragraph and article so that the student is able to understand the difference between the two. Let's to have a proper closing for the paragraph. So fourth paragraph must have a solution or a conclusion. Whatever article you are writing, you need to put a closing statement to the article. So few tips for article writing. Now I'm handing over the mic to Sunil sir. Sunil sir will read this. Sunil ji, please. I guess Sunil sir is not able to unmute himself. Can I do that? Yeah, sure. Thank you so much. Okay. So there are few tips. Write the topic name in very bold letters and underline it. A survey by Times of India showed that health of students can be increased by green vegetables, says Dr. Geeta Malhotra, food nutritionist. And the third, I guess the second tip is divide material into small parts. And third is, and first word of each paragraph can be very big. So this is basically when we are giving it in typing. However, in the examination, this might not be possible because it might not be grammatically correct. But we need to pay attention to whatever is important and we may underline it. Let's move on to the next. So some of the important articles we may do in our class, because in class 9 to 10 there is no specific syllabus, but these are some common topics which has cropped up over the years. There is one more topic we can add to this related to today's time. Terrorism, a threat to humanity. Thank you. Any other topic we could add to this for this year? Virtual classes or online classes related. Virtual and online classes. Thank you so much. Please don't forget to do it with your class 10th at least. They coped up with COVID times or like virtual classes. So these are one or two topics that would be time relevant. So these are some topics to do with our class 10. Yes, COVID pandemic. Next slide. How do we help them
collect data for article writing. So this is a mind map we can use. So we need to let them understand why, how, what, the, and what's the fifth one? Who can help out? So for example, if we were talking about virtual classes, so why are we doing virtual classes? Anyone? Because there are pandemic. Due to COVID pandemic, not due to inability of schools to reopen. Reopen, yeah. And what are virtual classes or online classes? Can anybody help a phrase with a phrase or a sentence? You can use the chat box as well. Connecting with camera. Satish sir, you have one. Okay. Satish ji, you have unmuted yourself. Can you help? He has muted himself back. Nidhi ma'am, what would be virtual classes? The Ma'am, interaction between which we students and teachers. connect. Thank you, Sunil ma'am. Connecting through online modes of communication. Ma'am, So this similar, reminds me of a similarity, line if there are I like can. 2-3 points Through internet, ma'am. through internet. Thank you. So this is how we get information for a particular article. Do we need to take a 5-minute break or should I continue? Chanchal ma'am? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, I'm asking, do we need to give a 5-minute break or should I continue? Ma'am, as participant wish, if they want, they can take a 5 minutes break. Otherwise, you can continue. Yeah, ma'am, I would like to 5 minutes break. So yes, we can take 5 minutes break and then we'll meet sharp at 12:20. Okay, ma'am. Thank you. Okay, ma'am. Meenu Thank ma'am, you we'll so meet much for sharp being at such a 12:20. wonderful. Yeah, I'm here only. I'm not leaving. Let the participants have a 5-minute break.
So welcome back. Meenu ma'am, can we start the session now? Yeah, sure. Yeah. Over to you, ma'am. Thank you so much, and thank you, Priyanka ma'am. Priyanka ma'am has written such a beautiful lines. I'll teach you in a room. I'll teach you now on Zoom. I'll teach you in your house. I'll teach you with a mouse. I'll teach you here and there because I'll teach you because I care. Thank you so much, Priyanka. Well said for the online classes. Next, for the paragraph would be analytical paragraph. If you have this year's syllabus and change this year for class 10, an analytical paragraph, it would be there. And if you had a look at the worksheets as well, there had been 2 worksheets specifically focused on analytical paragraphs. So it would having a weightage of 5 marks, and expected to write 100 to 120 words. The students will have an option of 1 or 2. There might be visual inputs, there might be verbal inputs, there might be textual inputs for them. And the skills they would need to answer the paragraph would be analysis and evaluation. The weightage of the paragraph, as we have said, it would be 5 marks, 3 for the content and 2 for the expression. And out of expression, 1 would be for accuracy, 1 would be for the appropriate words and spellings. So when we talk about expression, we would be talking about coherence, accuracy, everything at the same time. So I hope it's clear to everybody the details about the analytical paragraph. For example, now this is the example of the paragraph. Given below is an infographic related to cultural and leisure activities that boys and girls engage in. Look at the pie charts and extract information to write an analytical essay in about 100 to 120 words. Interpret, analyze, and explain the information. So now you can see on your screens information about cultural and leisure activities boys and girls engage in. So there would be some difference in the data. Can you perceive the difference between the data? Can I have a yes or a no in a chat box? Can you perceive some difference? Both the charts are the same. Yes, yes, there is some difference between them. Yes, Sunita Chauhan ma'am, thank you so much for responding. Yes, Sunanda ma'am, thank you, Sunanda ma'am. You are that good top. Smriti ma'am, you are 2-3 people are the top performers of the class, I must say, for the every session, not even mine, for every session. Thank you, Ritu Tyagi ma'am. So, what we focus upon
once we are going to teach the students to write an analytical paragraph. How would you like? Any suggestions? You have this pie chart and you have to help your students write a paragraph. What will you do? Anyone? I can see in the participants. Subali ma'am, can you please unmute yourself? Any suggestion? Please. Rupali ma'am, Aruna ma'am. Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. We can say that boys are involved in outdoor activities. We can say boys are involved in outdoor activities. Great observation. So this is what? This is inference. If we had a look at the learning outcomes for class 9th and 10th, it focuses a lot on inference and analytical abilities. So we need to help them understand and practice these abilities in the class itself so that they are not lost when they go for the examination. Any other observation? Girls are more interested than boys in reading, ma'am. Girls are more interested in reading than boys. What about dancing? Also in dance. Also in dancing, great. So we need to compare the data. First, when we compare a data, there are two things. One, what is common between the two, and one which is different between. So the Common students, is when they are listening to writing this music. paragraph, yes, Sunil, please continue. Sorry. Listening. May I continue? Right. So like that chapter we have on Kathmandu, it says na the music transcends all. It's a common language to all. So we can say it's again gender neutral, common to boys and girls both. So when we are writing an analytical paragraph, we need to pay attention to both the facts that are common to both and would be different in both of them. Like for example, if we are talking about soccer, we don't see a lot of girls playing soccer. So that paragraph would have two parts. One part would be focusing on the common points, such as Sunil sir has pointed, and then there we focus upon, for the latter half of the paragraph, we could focus upon the points that are different, such as outdoor games, which Sunanda ma'am has pointed earlier. Aruna ma'am has also pointed. Thank you, Smriti. So let's move on. Let's give a sample of it. Let's move on to the next slide, Priyanka. Thank you so much for participating. So this is a sample article on of an analytical paragraph. Can somebody help? Sunanda ma'am, you are the topmost, yes, because I can see only your name on the screen as of. Please continue. Okay, ma'am. Culture and leisure activities that keep children busy by XYZ. The given data shows how the children are spending their time in cultural and leisure activities. The boys and the girls seem to have different interests at some levels. But one thing that can be seen prominently is that both like listening to music in equal measures of 10% each. There is a bigger percentage of girls than boys which enjoys reading. Girls are a big 21% as compared to 2% boys. The physical activities and sports that girls and boys take up shows a shows a lot of variety. At one place where 53% of girls' physical activity includes netball, gymnastics, and dancing. The 54% of boys take up soccer, basketball, and skateboarding. The boys take almost double of what girls take up in computer games.
The percentage of girls dancing, 27%, is comparable to the boys who engage in basketball. We are able to see the comparison as well as difference between the varied interest of boys and girls from the given pie charts. Thank you, ma'am. Thank you so much, Smriti. Somebody's mic is unmuted. It's a request. Can you please mute your mic? Thank you so much, Smriti. You have been a huge help for the session. So this is one sample paragraph where the students need to draw comparisons, point out the common points, add on data as well, which is given in the pie chart. Because this is what shows that your base is that pie chart we are working upon. And then add conclusion to it. Thank you so much. He has written it very well. Let's move on to the next slide. I hope you are able to understand a little bit about how to help the students write an analytical paragraph. So now this is, let's go back, Priyanka. Thank you. Now this is a liner from an excerpt from an article that appeared in a magazine section of a local diary. The ban single-use plastic is impractical. The purpose of articles like bag and packaging is ultimately to make human life easier. Plastic articles do this well, so they should not be banned. So what we had done before is a graphical representation. Now we have a verbal clue. We are supposed to analyze the statement and then give argument to support or to counter the given argument. You can support it also and you can create it also. Do you agree to this statement? Anyone? Yes, no? Do we support this? No, ma'am. No, ma'am. Any reason why? No, thank you, sir. Disagree, Samriddhi says. Anyone else? Only making life easy is not the sole objective of any commodity. Very rightly said, Aruna ma'am. That only making life easier for the present generation should not be our motive. What should be our focus? Sustainable. Very well said. Perfect word, sustainability. Because if we have heard about the sustainable goals of 2030, this is the latest goal WNO is also accepting, that we need to make everything sustainable. Because in the manner we are using them recklessly, we might not end up leaving anything for the future generation. So anything else except sustainability? Any other point that you will use to support or negate the argument? Any? Our environment, ma'am. Environment. Great, sir. Yes, they are a huge, they create a huge, what should I say, right word? Destruction vocabulary. Destruction. Yeah, thank you so much. So these are some ways, then there are like different ways we were students. Let's move on to the next slide. So the next topic in the writing section would be diary entry. So what would be the basic format for diary entry? There's not a lot of things that we need to focus on, just a few. Yes, Aruna, can you help me read it? Yes, ma'am. Thank you. Top left, date, day and time. Second, tense, most frequently simple past, past present and future. And third, first person. It is always Yes, written in first person. thank you so much, Aruna ma'am.
That was great. That we need to just pay attention to just a few things. First, it is written in a first person. Next, because we are writing a diary entry about a thing that has already happened, so usually we use a simple past and a present perfect, and future in case we are mentioning some future planning for ourselves. And day, date, time in the beginning. Let's move on to the next slide. So some things that we can pay attention to. Let's move on to other participants as well. Richa ma'am. Let's go back, Priyanka, to the last slide. Thank you. Richa ma'am, can you please unmute yourself? Richa ma'am. Can I read it? Yeah, sure, you can read it, but I hope everybody is in the session. They have Okay, ma'am. kept the phone somewhere. Please continue. Okay, ma'am. Should I read? Begin the Yes, entry with a general sentence describing the day. In the body, discuss on event, feeling towards it, and conclude with final remark and future course of action. yes, the best way is to you start with your how you're feeling. It would give a proper introduction to what is coming up in the diary entry. Thank you, Sunil sir, for helping me out, and thank you, Sunanda ma'am, for offering. And then in the body, we describe why you are specifically feeling like that, and then we conclude the remark or your reflection of that particular event or feeling, and then what would be your future course of action. So if we keep these 3 points in mind, we usually end up getting enough marks till we are writing in a proper manner. Express fine in proper grammar and sentence, we'll end up having good marks. Let's move on to an example. So in the next slide, we'll see an example of a diary entry. So it's a sample. So we have begun with date, day, and time. Dear Kitty. So whose diary would it be? Anyone in the chat box? And Frank, thank you so much. Yes. So dear Kitty, today I had a frightful experience in a market in these corona times. So Anne has come to the present time. Can anyone else help me read? Someone else from participants, Shweta ma'am, Tanvi ma'am, please can anybody unmute themselves and read? Hello. Yes, ma'am. Please, Do you thank want me you. to read the sample? Yeah, please. All right. The first of all, it's the day, 20th September. Then the day, it's a Sunday. Time is 9 p.m. It's written for the diary. The diary is named Kitty, Dear Kitty. So today I had a frightful experience of an overcrowded market in these corona times. I had to go to the local market to get a photograph for my CBSE registration. I was scared to see so many people without masks at the market. I waited for 2 hours in the queue at the photo shop. It was much crowded as all schools are asking for photos these days. I somehow managed to get my turn to be clicked. But suddenly a girl rummaged in from nowhere and got inside the dark room before me. She came out in 5 minutes and did not even bother to say sorry. I was very angry and told about it to my mom. She said that it is upon us to ignore such people and not get angry. After this, I did my 5-minute mindfulness and got my peace back. I always do this when I'm disturbed and it really helps. Thank you, Tanvi ma'am. So- Thank you so much. Welcome, ma'am. After that, I think the name has to be there. So she has written good night and the name. Okay. Thank you, ma'am. So why do you think I have picked up this topic for a diary entry?
See, when we're initiating a child into a diary entry, we need to be very specific or very vigilant on the kind of topic asking them to write on. Why? Can somebody help me out with this? Yeah, please. I think they should be able to relate to the topic. Perfect. Relatability is the most important thing. So we have picked up a topic that makes sense to the child, giving photograph for the CBSE registration, because this is something they had been doing for, because this is the only time they had stepped out of their. Next, we need to make writing fun for them. Learning is important, but the method in which we teach is even more important, because sometimes we might be putting a lot of effort, but the learning on the part of the child may be less. So what we need to ensure that it's fun, and these are some tips to make it fun. They can make up a story, they can write it, and they can even write alternative endings to the same story. They can write a shopping list. Is something that everybody enjoys. So they can go on virtual shopping tours. They can write short messages to their sister, mother, or father. Your expression wall is a great idea in a happiness class or an EMC class. Then you can play small games. They place words on the back of each other and then guess what words they are. So the only focus or what we need to ensure is that they write. Because once they start writing, it will help them overcome their hesitation towards writing. Because now, usually what happens in the classroom, answer you in English, Hindi, that doesn't matter. But they'll answer once you put up a question. But once we start them to ask them to write, the result actually drops down a lot. So we need to make sure that they at least overcome. The first step would be they overcome their hesitation to start writing. So these are some tips. Let's move on to the next one. So for story writing, again, it's yeah. Thank you, Priyanka. So for story writing, these are some tips that we can pay attention to. And let's ask Shruti ma'am. Shruti ma'am, can you please help us read this slide? Shruti ma'am, can we have a yes or a no in the chat box at least if you are able to unmute? Shweta ma'am. So as the requested participants are unable to answer, can anyone else help me? May I? Thank you, Ruby ma'am. Please help. Sorry. So these are some tips to at least promote story writing. Because the best part about story writing is that there is nothing right and there is nothing wrong about a story. Because it's your story, you can give any twist and turn to the story. So that doesn't need to, what should we say, quote unquote correct, logically correct.
So moving on to the next slide. So activity time. Let's get up. Let's have some fun. The chat box is all yours. No need to unmute yourself. I'm giving you 3 minutes. Write anything you can write about hare and tortoise. Any phrase, any sentence. Start using the chat boxes. This activity is called 3-minute fast writing. You can write anything about the story you know. There's a tortoise. Slow and steady wins the race. Comes the moral. Anyone else? Thank you, Tanvi. Thank you, Ruby. Please type your answers in the chat. Rabbit was careless. Thank you, Sonal ma'am. There was a hare and a tortoise. Thank you, Sonal. Says tortoise and rabbit are discussing another race. Tanvi ma'am says, yes, kept under the tree. Ruby ma'am says the tortoise is moving steadily. Ritu ma'am says turtle and rabbit have become friends. Tortoise kept moving. Thank you, Sangeeta ma'am. Sonal ma'am, overconfidence made him a loser. Thank you so much. Anyone else? This is one activity. Rabbit is asking secrets of winning from the tortoise. Thank you, Ritesh sir. Very interesting. Learning secrets. Do you think tortoise gave him the secret? I don't know. So this is one small activity which can be used. Probably not. Thank you. The Ritesh ran. The hare ran fast. Thank you, Sanjay sir. Says I have a story related to it. Okay, over to Ritesh sir. The stage is all yours. We are asking Ritesh sir to narrate the story. Ritesh ji, that is different. Okay, ma'am. That's okay. Yeah, it is a bit different than the older stories that we have heard or that we have That's read. great. It is a bit different. Once the rabbit entered the zoo where the turtle was kept, and as he entered, he said all the animals to vacate the zoo in 5 minutes time. So the tortoise came to him and told him, yeah, actually I know what you are trying to do. Then the rabbit asked, what are you trying to say? Then he replied that you are actually taking revenge upon the loss that we have uh, with us from the fraternity of our grandparents. You know that I will not be able to vacate the zoo in 5 minutes, and that's how you would bomb it and you will blast it, and I will lose my life. That was it. That is actually too different. Wow. So that was wow. And two different. So we can have the base for the same activity and they can give twists and turns to the same activity or same story and then make up new stories and they will actually enjoy. Once I did it in my class and I remember the student coming up with that there was a race between a tortoise and a hare and tortoise knew that he might not win. So he started to think alternative and he went to the market and bought skates and used the skates. So this is one way we can help students build up stories, fire up their imagination. And once we do something like this in the class, they'll understand it or correct about a story. We can put it in any way we want it to be. Let's move on to the next slide. Thank you so much, Ritesh. It was fun. So elements of a what should a story have? So I can see Ruby ma'am's name on the screen. So Ruby ma'am, over to you. Please help us read this slide.
That was quick. Thank you so much. Yes, the voice was a little bit unclear, but she came up the right things. That character, need of the character, that is the desire, motivation, the conflict, and the change. So what would be the change? What was the character in the beginning of the story, and what is the change in the character at the end of the story? So these are some things we can help, which can help point out, we home in these 4-5 elements in the student that a story must have. So at least even if they cover 3 or 4 of them, they'll be at a better place if they go into it blankly. Thank you so much, Ruby ma'am, for the help. Let's move on. So how we put up a story? So orientation. So where there is a starting story, it is called orientation. And what the starting 2-3 lines must do? They must set up the scene, creating a visual of the scene, atmosphere or time of the story. Sorry. Excuse me. For example, if you remember our first chapter, Letter to God, how does the story start? Letter, he lived on the top of a low hill. So in 2 lines, we have introduced the character Lench. Used his profession, where he lives. So we have that set. So as the story progresses, the series of events, like it rains, and then it hails, and the crop is totally destroyed. What would be the complication related to it? That once the crop is destroyed, they have nothing to eat and no money for future as well to sow another crop. So what would be the resolution for him? What did he decide to do? He decided to write a letter to God, ask money, and once he receives them, he counts them and he finds that there are few. So he decided, that's the twist in the story, that he believes that the post office people are the crooks and they have taken up the money. So these are 4 things that would help organize the coherence which Sunanda ma'am was talking about, Smriti was talking about. How to put up a story that it makes sense. So this is an example of a story. And story is your TGT sample. Do you have this TGT sampler, everybody? So if you don't have the skill sharpener, so called skill sharpener, we can give a PDF of this sharpener to you in your Telegram group. Okay, nobody has it. Okay, we can forward this sharpener to you if you wish. Please, thank you, Sunil sir. Of course, we'll do it. I'll send the PDF of it. Group. Everybody's in the group, right? I can't hear you, Ruby ma'am. Can you please use the chat box? So, how do we start writing? There are 2 approaches to writing. One is the process approach, and one is a product approach. So, what is the process approach? All the linguistic people, they go by the process approach. That they believe that if we go through the proper process, then we'll have a good product. So process approach to writing includes brainstorming of ideas, that we write everything we know about that particular idea or topic.
use discussions, we can use pair work, we can use group work for brainstorming. So over to you. It's your call. Then we try to arrange them in a sequence. Then we write a rough draft. Then we revise that draft looking at it from a third person eye. Then we can proofread, correct it, then we'll have a final version of the story. And this approach goes for every piece of writing. Not it would work for article writing as well. It would work for diary entry as well. It would work for formal letter writing as well. It would work for any piece of writing you want to work upon. Let's move on to the next slide. So just revision topic, pre-write, evidences, just detailing, organize that, then draft, revise, and then we proofread. Next. So there is a difference between product and process approach. Approach is right or wrong. But these are some differences between the two. Would be your call to use any approach of writing you wish to, depending on your learners and your classroom. Can request Ritesh ji to read the difference between the two. In product approach, the writer assumes that writers produce text in one setting without revising or taking pauses in their work, forces the writer to think before writing. Product-oriented writers must have a clear plan for writing in their heads before composing. Next stage, one draft forces the writer to settle for what came first, which may or may not be his or her best work. Next is little or no opportunity for feedback from others. The last one is the product model is a make it or break it model. The very first reader who sees the writing. Ma'am, screen is disappearing. I can't see the text. Yeah, Priyanka ma'am, can we go back to the screen? Thank you. Yeah, now it is visible. The last one is the product model is a make it or break it model. The very first reader who sees the writing, be it a boss at work or a teacher at school, is its judge and jury. This very first reader of a piece grades it or evaluates it in some other way, returning the verdict to the writer. And should I read the product process approach also, ma'am? Yeah, sure, please. Okay. In process approach, the first point is it assumes that the meaning of the writing is created and evolves during composing and revision. The next one is multiple drafts are necessary as writing is a means of making knowledge, learning, and critical thinking. The next one is writing happens in stages that include but are not limited to pre-writing, writing, and revising. The next one is writing is a non-linear process and its stages often overlap. Next is writers actively seek feedback from readers and judiciously use that feedback in their revisions. And the last one is the process model empowers writers by encouraging them to understand and refine their writing strategies and techniques. That's all. Thank you, Ritesh ji. Welcome. So this is the difference between product approach and process approach. And as I have said, it depends on your learners and your classroom. Both the approach might work at different point of times. Specifically for a diary writing, probably a product approach might work because when your feelings are relatively new, you are able to put them on paper very easily rather than when they have become older, when some time has passed. Whereas for some formal pieces of writing, process approach might be a better approach. Let's move on to the next slide because I want to wind up on time. I'm understanding the time is like almost up.
So this is the end of our session. So we are ending up with the quote: either write something worth reading or do something worth writing. So either you write well so that people find it worthy of reading, or you do something that people wish to read. So this is a small video for you before we end. And before I end, I'm Meenu Gupta, and we did writing skills theory part for the feedback form. Let's watch this video. Thanks a lot, ma'am. Thank you so much. So these are small videos. These are humorous videos, and using these small videos in the classroom, you can initiate a lot of writing tasks in your own classrooms. Specifically, when we are doing an online class. So in case of any help, you can reach out to me or Priyanka ma'am on the Telegram group, or Priyanka ma'am has given her number as well. So I hope you have a great day. And thank you so much for being such wonderful participants and listening to me. I hope I was of some help. Thank you. Thank you very much, ma'am. Thank you, Meenu ma'am. Ma'am. Thank you, Meenu ma'am and Priyanka ma'am, for such a wonderful session. So that's all for today. See you tomorrow at 9:30. Thank you all. You may leave